लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी, उसके बेस पे मतलब सॉल्व कैसे किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बात की थी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। तो आज उसके एक दो प्रॉब्लम बाकी है, एक आध वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, वो देख लेते हैं। सी, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सो एंड सो गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर प्लस सी नहीं आता। प्लस सी नहीं आता मतलब आपको x और y की वैल्यू दे के रखी होगी, जैसे यहाँ पे दे के रखा है। जनरल सॉल्यूशन में प्लस सी आता है और वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू देके रखी है, तो हमारा प्लस सी आएगा, बट वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन वी विल फाइंड सी। राइट, चलो अभी हमारा जो क्वेश्चन है दिस वन। ओके, तो इसको अगर लिखना है तो हमारे पास है क्या, हमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो अगर इसको मुझे कंपेयर करना हो किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, then obviously p will be this one and q is equal to this one. So what we get, p is equal to cot of x and q is equal to 2x plus x square into cot of x. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रल फैक्टर यानी आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स which is equal to e raised to integration of p is cot of x dx। कोट का इंटीग्रेशन होता है, कोट का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x, और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि e रेस टू log x अगर है तो उसका आंसर x आता है, मतलब e और log रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा x। ये क्या है हमारा आई एफ। ओके, चलो तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इंटू आई एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। चलो आई एफ हमारा क्या था x, सो y इंटू एक्स विच इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू x है हमारी, ये रही, ये हमारा आई एफ है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ q इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ x, आई एफ इज x dx। So y of x ओके इज इक्वल टू, ये जो है ये अंदर जाएगा, सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू cot of x dx। so y into x which is equal to 2 time integration of x square into dx plus integration of x cube into cot of x dx। right, so इसका आंसर क्या आएगा x क्यूब बाई 3। so y into x which is equal to 2 into x क्यूब बाई 3, और यहां पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, दिस इज 1 दिस इज 2। ओके, या तो इसको I1 ले सकते हैं प्लस I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइन, व्हाट इज I1,
I1 is integration of x cube into cot of x dx. This is 1, this is 2. रूल क्या कह रहा है? I1 is equal to, first is it is second integration minus first derivative second integration whole integration, right? This is the rule. So I1 is equal to x cube into log of sin x minus 3 integration of log sin x into x square dx. Again, this is 1, this is 2. So I1 will be copy paste clear, fine. So I1 will be x cube into log of sin x minus 3 times, first is it is second integration minus first derivative, that is cot x, second integration whole integration, right? चल सॉल्व करते हैं. Fine. So we get I1 is equal to x cube into log of sin x minus 3 into log of sin x into x cube upon 3 minus minus plus integration of 3 will be cancelled out. So cot of x into x cube dx. So this term will be cancelled out. So I1 is equal to x cube into log of sin x minus log of sin x into x cube plus integration of cot x into x cube dx. So this term will be cancelled out. So this is your I1. Okay. Next one. See. The next question is, find the equation of curve passing through the point 0 to 1 if the slope of the tangent to the curve at any point x comma y x comma y is equal to the sum of the x coordinate abscissa and the product of x coordinate and y coordinate. चलो कोई बात नहीं. इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी x कॉमा y इज इक्वल टू 0,1 लेना है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy बाई dx लेना है. dy बाई dx दिया हुआ है, क्या देके रखा है?
at any point xy is equal to the sum of x coordinate, the sum of x coordinate and product of x coordinate y coordinate at a point. मतलब the slope of the tangent to the curve at any point, slope of the tangent is x dy by dx is equal to the sum of x coordinate plus product of x coordinate and y coordinate, that is xy, right? चलो, तो ये अपने को देके रखा है. क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1. 0,1 यानी x और y की वैल्यू देके रखी है. If the slope of the tangent, that is dy by dx, to the curve at point x comma y is equal to the slope of the tangent yani dy by dx at any point equal to the sum of x coordinate, that is abscissa, okay, that is x, and the product of x coordinate y coordinate, that is xy. ये देके रखा है, सॉल्व करते हैं. तो ये दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है. पहली मेथड कौन सी है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड. ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से भी सॉल्व होगा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व होगा. और वेरिएबल सेपरेशन मेथड इजी है कंपेयर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, अगर मैं x को कॉमन ले लूं देन इट विल बी y प्लस 1. x और y को अलग कर देते हैं, हम ये यूज करेंगे. सो dy by dx, सॉरी 1 अपॉन y प्लस 1 dy is equal to x dx. Now integrating both side, this will be log of y plus 1 is equal to x square by 2 plus c. बट हमें x और y की वैल्यू देके रखी है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. x और y की वैल्यू देके रखी है. क्या देके रखा है क्वेश्चन के अंदर? x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. सो व्हाट वी गेट, log of 1 plus 1 which is equal to 0 by 2 plus c. So we get log of 2 is equal to 0 plus c implies c is equal to log 2. Then substitute the value of log 2 in this equation. So we get log of y plus 1 is equal to x square by 2 plus log 2. So log 2 will be minus. So we get log of y plus 1 minus log of 2 which is equal to x square by 2. Then this will be log की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें then this will be y plus 1 by 2 is equal to x square by 2. और सिंप्लीफाई अगर करना है तो y plus 1 by 2 is nothing but e raised to x square by 2. और सिंप्लीफाई करना है तो y plus 1 is equal to 2 टाइम e raised to x square by 2. This is your answer. Okay, thank you.